Ladies and gentlemen, on behalf of Kaptify Consulting Investor Relations team, I welcome you all to the H2 and FY26 post-earning conference call of TBI Con Limited. Today on the call from the management, we have with us Mr. Yogesh Yadhaus, Managing Director and Chairman, and Mr. Ninad Yedurkar, Home Time Director and Chief Financial Officer. As a disclaimer, I would like to inform all of you that this call may contain forward-looking statements which may involve risk and uncertainty. Also, this is a reminder that this call is being recorded. I would now request the management to detail us about the business performance highlights for the period ended March 2026, the growth perspective, and the vision of the coming years, post which we will open the floor for Q&A. Over to the management team. Thank you, Aniket ji. Good afternoon, everyone. I am Ninad Yedurkar. I am the whole-time director at TBI Con Limited. I welcome all of you and thank all of you for joining the first post-earnings con call for our company. Today marks an important step for TBI Con Limited in becoming an investor-friendly company. For much of the time after our IPO, we were focused on doing the work, but we have taken on board the feedback received from many of you that apart from doing the work, we need to showcase the work as well. We need to highlight, we need to share the work, good work that the company is doing. In line with this, we have prepared and uploaded the presentation, the investor presentation that we are watching right now on the screen. As well as through this con call, we will discuss much of the progress that we have made, the planning that we have for future, any other questions that you may have. We are single-mindedly focused on the goal that we mentioned before our IPO, and that is to become a 1,000 crore company. And over the last couple of years since the IPO, your company has made a tremendous progress. Some of this progress is captured in the numbers that we have given. At the same time, much of the progress is still work in progress. And so that means in near future as well as in the long term, we'll be able to see good results of this. For example, we have invested heavily in research and people. Our work in terms of research, for example, has helped us there's a high yield product. Later on, we will share on the screen as well. There is a high yield product for us, which is known as corn germ. And our research on that has managed to help us increase percentage generated of that particular product. At the same time, our investment in people, for example, has given us support of excellent best of the industry milling teams. And the milling teams, together with their joint work, have managed to reduce our byproduct generation and for help company focus mainly on the main products that we sell to our customers. We'll discuss lot more things. We'll discuss lot more things as we go along. But let me start by giving a brief view of what our company does. We are mainly operating out of Mirrors, which is in Sangli district in south of Maharashtra. This is Karnataka border, Maharashtra-Karnataka border. And that is why you see in the sourcing regions as well, Karnataka remains the main source for us. In fact, some of you must be aware of this, but Karnataka is considered, is known for the best quality of corn across the entire world. So Karnataka corn is considered the best quality corn in the world. And Karnataka, Maharashtra, some parts of Maharashtra as well, we source from. These are the main sourcing regions for us. Our capacity is 390 tons per day. So this is across our 3 plants. We have 2 plants in Sangli and a plant in Malkapur. All these plants are now in hand. All these plants are now operational. The work that we have put in capacity increase for after IPO has now come to fruition. When it comes to core values, I would really like to share this with you because this is what we strongly believe in. Customer satisfaction, for example, customer service, for example. While we are very proud that we are probably the most cost-efficient dry milling company in the entire world, but at the same time, what we are really known for in the industry, when it comes to our buyers, is the kind of quality that we provide. In fact, we find it always a matter of pride for us that whenever somebody talks to a miller in a company like ITC, for example, these millers always say that we need best India quality.
And that best India quality is when they're referring to our company, because TBI Con Limited, as you know, was earlier the best India. That was the name of the firm before we became a limited company. So these are the core values that we take pride in. Can we go to next slide, Aniket ji? This is a quick snapshot of our journey. This company was started in 1999 by Yogesh ji, and it started in Sangli, working with maize. And that is because, as I said earlier, we are at the border of Maharashtra and Karnataka. And since Karnataka remains a major producing center of corn, we'll have many businesses related to corn in our area. So he also started in corn. He is a first generation entrepreneur. So started with the 30,000 rupees kind of investment, and gradually he took some good decisions, some good progress that we have made, managed to attach with good customers, and today we are where we are. So as we said, before IPO, we had one plant in Sangli. After IPO, we've established another plant in Sangli. And at the same time, using internal accruals, we have established another plant in Malkapur, which is in Buldana district of Maharashtra. So we have all the ISO standard and certifications and everything else that generally our customers require. Next slide, please. I will hand this over to Yogesh ji now. So he will quickly tell you about what the company does in detail. Next slide, please. फार्मर जो 90 डेज में मेज का जो क्रॉप है वो 90 डेज का क्रॉप रहता है। 90 टू 100 डेज में जब फार्मर्स इसकी बुआई करता है तो 90 टू 100 डेज में मार्केट में वो माल बेचने के लिए पूरा आ सकता है। और कर्नाटक और ये एरिया के जो भी फार्मर्स है इनको पूरा उसका अवेयरनेस है, उनको ट्रेनिंग अच्छी तरीके से है कि कौन सा कंपनी को कौन सी क्वालिटी माल लगता है। वो माल में अलग अलग वैरायटी रहते हैं। जो हम फ्लेक्स बनाते हैं प्रीमियम ग्रेड है, पोहा क्वालिटी उसको बोलते हैं। जो सेकेंड क्वालिटी जो हम ग्रिड्स के लिए, ब्रोकन के लिए या फ्लोर के लिए यूज करते हैं वो क्वालिटी रहता है। और जो भी उसमें एनिमल फीड क्वालिटी या स्टार्च क्वालिटी रहता है वो सेग्रीगेशन और वो हिसाब से उसको जो भी ड्राइंग करना है। तो कर्नाटक के फार्मर्स के पास वो प्रॉपरली ट्रेनिंग है, उनको वो पूरा नॉलेज है। तो वो हिसाब से फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी भी ये पूरा प्रोसेस करती है। हमारे यहाँ एपीएमसी मंडी में भी इसके डे टू डे ऑक्शंस रहते हैं। ऐसे ही मलकापुर में जो बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स पूरा उसको लॉरी के साथ लेके आता है और उधर के बाद का जो ड्राइंग और उसको बैगिंग करना है वो उधर का आड़ती रहता है या व्यापारी रहता है। वो हिसाब से वो वहां पे रॉ मटेरियल जो मंडी में आता है तो उसमें क्वालिटी कौन सा अच्छा है, क्वालिटी में पैरामीटर्स क्या है। इसमें नॉर्मली कमोडिटी में आप कोई भी देखेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट रहता है कि मॉइस्चर कंटेंट हमें क्या लेना है, उसका साइज यानी उसका काउंट साइज क्या लेना है, और उसमें फॉरेन पार्टिकल्स या अदर जो भी मैटर्स है उसका परसेंटेज कितना अपने को मिनिमम लेना है। तो उसके लिए मेन जो प्रोक्योरमेंट की हमारी टीम है, और प्रोक्योरमेंट की टीम हमारी पूरा कर्नाटका, महाराष्ट्र में जलगांव, मुक्ताई नगर, एमपी में भी जो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी वेयर हाउसेस है, उसके साथ साथ जो भी कंपनीज है कारगिल इंडिया जैसी, उनके साथ भी हमारी टीम डे टू डे उनसे कम्युनिकेट में जो भी मटेरियल मार्केट में आ रहा है उसके ऊपर जो भी क्वालिटी हमें चाहिए उसका प्रोक्योरमेंट पूरा हमारा टीम। और मेनली ये प्रोक्योरमेंट के सोर्स में मैं भी रहता हूँ। तो वो हिसाब से ये पूरा जो भी अपने को कंपनी के लिए जो माल क्वालिटी का लेना है और उसके बाद उसको स्टोरेज है। स्टोरेज में हमारे पास अभी साइलोज और इंटरनल वेयर हाउसेज भी है और एक्सटर्नल वेयर हाउसेज भी है। ऐसे दोनों भी फैसिलिटी है। साइलोज में मिनिमम कॉस्ट में उसका स्टोरेज अच्छा हो जाता है। उसके बाद उसको अगर जरूरत है तो उसको फिमिगेशन करना है और फिमिगेशन के बाद उसको हम प्रोसेस में भी ले सकते हैं। प्रोसेस में हमने जब प्लांट स्टार्ट किया ड्राई मिलिंग का, तो स्टार्ट करने के बाद हमें जो भी हम कंपनी से मशीन्स ये लिए थे तो उसमें हमारा स्टेज वाइज हर साल में ऐसा सर्वे हो गया कि भाई हमको कौन से कंपनी का कौन से मशीन में स्पेशलिटी है, कौन सा मशीन कौन से कंपनी का एक्सपर्ट्स है। कि डिस्टोनिंग के लिए कौन सा कंपनी काम करता है,
मैग्नेट के लिए कौन सा कंपनी प्रॉपर अच्छा है, डीजर्मिनेशन के लिए कौन सा कंपनी अच्छा है। तो वो हिसाब से हमने सांगली के प्लांट में स्टेज वाइज जो जो एक्सपर्ट्स कंपनी है उनके मशीन्स और ये ऐसा करके सांगली के प्लांट का कैपेसिटी जो अभी हमने नया भी ये किया है, तो वो हिसाब से उसको पूरा सेमी एटोमाइज और जो भी हाइजीन रिलेटेड है वो हिसाब से मेंटेन किया है। पैकिंग और स्टोरेज में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में जैसा एमएनसी कंपनी का रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से उसको गैंगवेज और उसको स्टोरेज के हिसाब से उसको स्टोर किया जाता है। स्टोरेज का जो भी एफएसएसआई के रूल्स है वो हिसाब से उसको स्टोरेज और जैसा जरूरत लगेगा, तो जो उसका लाइफ साइकिल है, यानी ब्रोकन मेज हम जो फार्मर से मेज लेते हैं वो हम मेज 1 साल 2 साल 2.5 साल भी उसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो होल कमोडिटी है। लेकिन एक बार उसको हम प्रोसेस के लिए ले लेते हैं, तो उसको जैसा हम फिनिश प्रोडक्ट में जाते हैं तो उसका शेल लाइफ जो है वैसा कम होते जाता है। तो शेल लाइफ जो जैसा कम होते जाता है, तो उसमें जो भी फिमिगेशंस का जरूरत है, उसको मिथिल ब्रोमाइड से करना है या एल्यूमिनियम फॉस्फेट से करना है, जो भी स्टैंडर्ड्स उसके जो प्रोसीजर्स है, वो हिसाब से हमारा पूरा फिनिश गोडाउन में जो टीम है वो पूरी स्किल टीम है, वो हिसाब से उसको प्रॉपरली फिमिगेट करके उसको डिस्पैच तक का जो भी प्रोसीजर है वो हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी इसमें हमने जो डेवलप किया हुआ कस्टमाइज मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्स के लिए जो प्रोसीजर है, वो मार्केट का जो प्रोसीजर है उसमें हमने अलग से उसको जैसा रिक्वायरमेंट्स है बायर को कस्टमाइज करके उसको साइज में जैसा फ्लेक्स का साइज चाहिए या फ्लेक्स के साइज में जो उसका उसको जाड़ी बोलते हैं क्या, थिकनेस, थिकनेस जो उसको बोलते हैं कि समझो जो भी मेज फ्लेक्स से उसको पोहा बनाने वाला है तो उसको थिकनेस थोड़ा ज्यादा चाहिए। जो भी नमकीन में और रसना में यूज करने वाला है उसको थिकनेस कम चाहिए। उसको कलर और उसका जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो हिसाब से हमने पूरा उसका प्रोसीजर पूरा मशीन कस्टमाइज करके फाइनलाइज किया है। इसमें डिस्टोनर से लेके जो भी पॉलिशर है उसके लिए हमारा आर&डी टीम ने पूरा चाइना के भी जो पॉलिशर से टर्की से भी जो भी सामान लेना है, ऐसा ये पूरा अलग से उसको डिजाइन करके फिर जो उसका कुकिंग प्रोसीजर है, उसको ड्राइंग का प्रोसीजर है, वो इस सब से उसको हम फाइनल करके ये जो मेस फ्लेक्स है ये है जो भी नमकीन इंडस्ट्री है या जो उससे फ्लेक्स बनाती है उनको हम सप्लाई करते हैं। इसके लिए उसको रॉ मेस फ्लेक्स बोलते हैं। अगर इसको हम रोस्टिंग करेंगे तो ये रेडी टू ईट में भी जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो भी रॉ मटेरियल मेज रहता है तो मेज के बाद उसका कैपेसिटी और उसका जो यूटिलाइजेशन कस्टमर के लिए है अपना, अभी इसमें यमन कंट्री या कोलंबो श्रीलंका ये कंट्री में है जो कर्नाटक से प्रीमियम क्वालिटी आता है उसको पूरा प्री क्लीनिंग करके वो डायरेक्टली उनको फूड में भी जाता है। इसको उनका 12 महीना जो क्वालिटी सेट रहता है, ब्लड रेडिश ऐसा जो मेज रहता है कि जो मेनली पूरा इंडिया में कर्नाटक में ही अवेलेबल रहता है। तो वो हिसाब से इंडियन येलो मेज का प्री क्लीनिंग क्लीनिंग करके भी हमारा एक्सपोर्ट डिवीजन भी काम करता है, वो एक्सपोर्ट में भी जाता है और डोमेस्टिक में भी उसको यूज आता है। और इंडिया का जो भी मेज है ये पूरा नॉन जीएमओ है। नॉन जीएमओ का मतलब है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड उसमें कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे कि ये अमेरिका और इंडिया के बीच जो एग्रीकल्चर में एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, तो ये अमेरिका का पूरा प्रेशर था इंडिया के ऊपर कि आप हमारा मेज लीजिए क्योंकि उनका मेज जो है वो जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। कि जहां अपना इंडिया का फार्मर्स 1 एकड़ में 50 क्विंटल से लेके 60 या 70 क्विंटल तक जाता है, वही ये जीएमओ जो बनाते हैं कंट्रीज वो मिनिमम 200-250 के ऊपर भी प्रोडक्शन निकालते हैं। तो इसीलिए इनका इंपोर्ट प्राइस जो अपना जेएनपीटी है या इंडिया के लिए अपने प्राइस से भी उनको वो पैरिटी में ज्यादा इफिशिएंट रहता है। लेकिन ये अपना जो है वो ऑर्गेनिक या उसको जेनेटिकली हम मॉडिफाइड नहीं करते हैं, तो ये सीड अपना पूरा डेयरी इंडस्ट्री, पोल्ट्री इंडस्ट्री और ह्यूमन के लिए ये क्वालिटी सबसे बढ़िया है।
तो ये क्वालिटी के लिए बाहर अपने को $25 से लेके $40 तक अलग से एक्स्ट्रा प्रीमियम भी मिलता है। कॉर्न जम्स जो हम देख रहे हैं, कॉर्न जम्स में क्या रहता है कि जो भी अभी हमारा जो मुंबई का एटोमाइज प्लांट है और ये डोमेस्टिक के प्लांट में हमने जो कस्टमाइज किया है, तो कॉर्न जम का परसेंटेज अभी हम 4%, 4.5% जैसा हम मेंटेन कर रहे हैं। कॉर्न जम जो है उसका वैल्यू ऑयल इंडस्ट्री में उसको अच्छा कीमत मिलता है। इसमें जो भी बाय प्रोडक्ट उसका कॉर्न जम के बाद निकलता है, वो भी एनिमल फीड के लिए उसका डीओसी निकलता है, वो भी उसका अच्छा दाम रहता है। और जम के लिए स्पेशली हमने 3 साल से पूरा हमारा R&D टीम काम कर रहा है कि जब हम इसमें 1% या 2% में थे, वो हमने अभी 4.5% तक उसको अचीव किया है। और टारगेटेड हमारा आगे जाके भी 6% से लेके 8% तक हम जम कैसा उसका परसेंट अलग निकाल सकते हैं। यानी मेज में जो एंडोस्पर्म रहते हैं, वो एंडोस्पर्म उसको जैसा हम डिजर्मिनेशन या अलग करेंगे, तो वेट मिलिंग में क्या रहता है कि उसको डिजर्मिनेशन के बाद अलग अलग पूरा निकाला सकता है। ड्राई मिलिंग में हम इसको जितना जरूरी है उतना ही मॉइस्चर देते हैं, और उसमें हमको जो जर्म क्वालिटी का निकालना है और उसमें ऑयल परसेंटेज जो मेंटेन करना है, ये मशीन हमने डेवलप किया है, ये कस्टमाइज किया है। तो इसमें हमारा जर्म का परसेंटेज और कंपनी को वो हिसाब से वैल्यू एडिशन उसका अच्छा हो गया। ब्रोकन मेज का जो प्रोडक्ट है, वो ब्रोकन मेज हम डोमेस्टिक में जो इंडिया लेवल में छोटे गृह उद्योग रहते हैं, SSI इंडस्ट्रीज रहती है, ये ब्रोकन मेज से एक्सट्रूडेड स्नैक्स बनाती है। उसका मक्के का जो पाइप आता है, वो मक्के का पाइप है, चीज बॉल्स है, ये सब चीजें ब्रोकन मेज से अपना डोमेस्टिक जो भी गृह उद्योग और छोटी कंपनी है वो इससे बनाती है। कॉर्न ग्रिड्स यानी ये स्टेज वाइज जैसा हम मेज में उसको प्री क्लीनिंग क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद उसको डीजर्मिनेशन करते हैं। डीजर्मिनेशन में उसका जो एक पोर्शन है, वो पोर्शन निकलता है एनिमल फीड के लिए, कि जो एनिमल फीड इंडस्ट्री में फिलर के जगह भी यूज होता है, और डायरेक्टली जो भैंस को और गाय को जो रहता है दूध के लिए, वो मक्के का चूनी, मक्के का भरडा बहुत पसंद है। मिल्क का जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मक्के का चूनी का यूज सभी जगह होता है। हम इसके लिए मुंबई में तो हम 2001 से जितने भी तबेले हैं, कि जो गोरेगांव में है आर्य कॉलोनी, या आउटसाइड मुंबई में गुजरात हाईवे पे, वो सही पहला जगह पे वहां से हमारा सप्लाई है। अभी हमने महाराष्ट्र मुंबई के साथ साथ गुजरात का भी मार्केट पूरा नया डेवलप किया है। बाकी महाराष्ट्र में भी जो विदर्भ मराठवाड़ा है, वहां पर भी उसके लिए अच्छी तरीके से हमारी पार्टियां भी डेवलप होगी। लास्टली जो हमारा हॉट प्रोडक्ट है कॉर्न ग्रिड्स है। तो कॉर्न ग्रिड्स यानी ये अभी एक्सक्लूडेड स्नैक्स में पूरा रनिंग प्रोडक्ट है। ये कॉर्न ग्रिड्स में अलग अलग स्पेसिफिकेशन कंपनीज के रहते हैं। जैसे MNCs में ITC ने बिंगो निकाला है, ऐसे प्रताप स्नैक्स में उसने उनका अलग से ब्रांड निकाला है। तो जैसा उनका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस या जो स्पेसिफिकेशन रहता है, वो हिसाब से हम उनको जैसा चाहिए वैसा ग्रिड्स पूरा बना के देते हैं। इसमें 101 से लेके 1010 तक ऐसे अलग अलग वैरायटी है। और ये स्टूडेंट स्नैक्स का मार्केट अभी इतना ग्रो हो रहा है कि हर साल में दुबई में भी उसका गल्फ फूड रहता है। तो गल्फ फूड में ऑल ओवर वर्ल्ड से सभी कंट्रीज वहां प्रेजेंट करने के लिए आती है कि स्टूडेंट स्नैक्स में अभी नया डेवलपमेंट क्या हो गया है, नए कौन कौन से प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं। कॉर्न ग्रिड्स के साथ साथ उसका ब्रूवरीज में भी जो यूज हो रहा है, उसका पिज्जा बेस में भी कॉर्न ग्रिड्स का ही जो फाइन ग्रिड्स रहता है वो यूज होता है। तो ये एक्सक्लूडेड स्नैक्स का अभी मार्केट डे टू डे हर साल अगर हम देखेंगे, तो इसका मार्केट डे टू डे बढ़ ही रहा है। और ग्रिड्स में ही हमारे पास अभी कैपेसिटी पूरा जो भी है वो कंप्लीटली हो गया है। तो मार्केट में हम नया बायर्स भी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसको सप्लाई अभी अच्छी तरीके से दे पा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो रिक्वायर्ड लाइसेंसेस वगैरह जो ये है FSSAI के लिए, ये और जो हमारा स्पाइस बोर्ड है, IEC है, वो पूरे लाइसेंस और उसका अथॉरिटीज का पूरा हमारे पास परमिशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
एक कंपनीज है, एमएनसीज कंपनीज भी है, एक्सपोर्ट भी कंपनीज भी है कि जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप कम से कम 10-12 साल से कंटिन्यू चल रहा है, ये सब कंपनी। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सपोर्ट में जो हमारा प्रेजेंस है वो मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है, गल्फ है, और फार ईस्ट में भी अभी हम मलेशिया, वियतनाम जैसे और बाकी कंट्री भी नया नया कैप्चर कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये स्लाइड में है। जो बेस्ट इंडिया और टीबीआई कॉन का जो प्रोक्योरमेंट का जो स्किल है, प्रोक्योरमेंट के स्किल में क्या है कि ये मार्केट, कमोडिटी मार्केट में गवर्नमेंट का पॉलिसीज इथेनॉल के लिए क्या है, स्टार्च इंडस्ट्री के लिए क्या है, और फूड के लिए हमको क्या करना है, वो हिसाब से पूरा हमारा प्रोक्योरमेंट का टीम काम करता है। मेनली बाजार का उसको तेजी मंदी बोलते हैं। यानी इसमें मेज के प्रॉपरली दो क्रॉप रहते हैं। महाराष्ट्र में खरीफ और रबी रहता है। खरीफ क्रॉप जो आता है वो अपना अक्टूबर नवंबर से आता है। अक्टूबर नवंबर से खरीफ क्रॉप जनवरी फरवरी तक चलता है। और सेकंड क्रॉप जो रबी का आता है वो मार्च 15-20 तारीख से आता है। वो जून के 15 से जून के एंड तक चलता है। जैसे ये महाराष्ट्र में खरीफ और रबी है, वैसे ही अक्टूबर से पहले अगस्त में 15 तारीख से लेके अगस्त एंड से पहले निजामाबाद और वो पूरा आंध्रा का एरिया है, वो क्रॉप निकलता है। ये निजामाबाद आंध्रा का निकलने के बाद फिर क्रॉप अपना महाराष्ट्र का और कर्नाटका का निकलता है। महाराष्ट्र कर्नाटका का जो क्रॉप जनवरी फरवरी तक चलता है, उसके बाद एमपी एंटर करता है। एमपी का क्रॉप भी दिसंबर महीने से स्टार्ट हो जाता है, और उनका कई कई डिस्ट्रिक्ट्स में छिंदवाड़ा और ये बेल्ट में सेकंड क्रॉप भी मार्च अप्रैल के बाद आता है। मार्च अप्रैल का क्रॉप जो एमपी और महाराष्ट्र है, कर्नाटका और निजामाबाद तेलंगाना, ये क्रॉप भी शुरू रहता है। उसके बाद का जो क्रॉप रहता है वो बिहार का भी क्रॉप मई महीने से निकलता है। बिहार में गुलाब बाग, पूर्णिया, ये जो मंडी है, वो मंडी से ये क्रॉप निकलता है। और जैसा बिहार का प्रेशर थोड़ा कम होते जाता है, तो उसके बाद तुरंत जून 15 या जून एंड से यूपी का क्रॉप निकलता है। तो अभी ऑल ओवर इंडिया में आप कोई भी एरिया ऐसा बोलेंगे कि यहाँ मक्का चाहिए, तो उधर मक्के का भी क्रॉप अवेलेबल है। एक्सपर्ट या इसमें क्या रहता है कि जब जो एरिया का सीजन है, तो वो एरिया में जो भी सिलेक्टेड कॉर्न्स है, यानी जो क्वालिटी कॉर्न्स चाहिए, वो क्वालिटी कॉर्न्स अपने को अलग से छाट के उधर के लोकल वेयर हाउस से लेके साइलो है और वेयर हाउसिंग का जो भी स्टोरेज का जहां जहां पे हमारा अरेंजमेंट है, वहां पे पूरा ये हमारा टीम प्रोक्यूरमेंट करके जो भी कमोडिटीज का अप डाउन है, जो भी मार्केट का सर्वे है, कि मार्केट के सर्वे में अगर आप देखेंगे तो ये मेज के प्राइसेस में लास्ट ईयर में जब इथेनॉल इंडस्ट्री पूरा सपोर्ट में था, तो इथेनॉल इंडस्ट्री 24-25 रुपीज ले रहा था, और फूड के लिए इसका भाव 28-29 तक ऊपर गया था। तो ये जब इतना प्राइसेस हाइक हो जाता है कि मिनिमम 30% 40% का प्राइसेस में हाइक रहता है, तो इधर ही हमारा एक्सपर्टी पूरा काम आता है कि जो भी सीजन में हमने उसको 20-22 रुपए से 23-24 तक जो भी हम स्टोरेज उसको करते हैं, वो पूरा हमारा 90 डेज to 100 डेज का जो स्टोरेज रहता है, वो हमें इसके लिए बहुत सपोर्ट करता है कि वो हम हमारे जो एमएनसी कस्टमर्स है, एक्सपोर्ट कस्टमर्स है, उनको हम कंटिन्यूअसली वही रेट में और वही क्वालिटी हम उनको दे पाते हैं। तो ये रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट और रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट में हमारे सब डिस्ट्रिक्ट वाइज, रीजन वाइज हेड्स है, और पूरा रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट उनका 365 डेज हर एक जगह जो भी क्वालिटी है वो हिसाब से चला है। नेक्स्ट। Next slide, please. Thank you, Yogesh ji. So this is a quick snapshot of the business highlights that we have achieved in second half of last year and the entire financial year 2026. As the first point says, some of you might remember that in the last presentation that we had uploaded, we had mentioned that our capacity was 350 TPD. The 40 TPD additional capacity that we wanted to activate in Malkapur plant has now been operationalized. And so that has come in hand now at the end of March 2026. Our volume growth has been extremely strong, as these numbers highlight as well.
So about 44% year-on-year increase is what we have witnessed. About direct procurement, this is something that we are especially focused on and proud about because direct procurement, as you can imagine, means by buying directly from farmers. And more we buy directly from farmers, we are going to get better rates. Obviously, having said that, this can never be a huge number. I think we are nearing the maximum number that we could achieve because we need to find bigger farmers, we need to find farmers who will be able to provide this kind of quantity that is required for us. And so obviously this number can never become 75% or whatever, right? This number will always be in this range, but we have now reached 25%, which I think is a significant improvement that we've made in this year. Uh, Rest of the points I think are pretty self-explanatory. Another point that we are quite pleased about, and I think our investors will also be pleased about, is operating cash flow. So that has become positive now at 33.41 crores. Uh, should we open this for question answer now? Probably we have taken more time than we were allotted. Yes, sir. Yes, sir. I think we can start the question and answer session. All Okay. those who wish to ask a question, please use the option of raise hand. You can also post your questions in the Q&A box. We'll take the first question from Murtaza. Please go ahead. Hi, sir. Good afternoon. Uh, Congratulations on the good set of numbers and the strong volume growth. I remember we had met in the investor conference in Delhi. So, sir, I just wanted to understand a little better regarding our TBI maize processors unit. That is our 100% export-oriented unit. So earlier, last time you had mentioned that there were some approvals and paperwork pending for it to operationally start, and I just wanted to understand what sort of progress has there been and where exactly are we? Yeah, thank you. That entity that we are talking about, TBI Maize Processors Private Limited, that plant is now operationalized. So that's the progress that we have made. So that is now operationalized. It has started production. It has started exports as well. And in 25-26, TBI Maize Processors Private Limited has generated a revenue of 12 CR. So that entity has become operational. Where it is right now in terms of the documentation, in terms of the permissions, is we have applied for the full OC. So I think we had discussed last time, possibly this part as well. And the occupancy certificate, full occupancy certificate that we need to get from JNP authorities, we are waiting for that. And probably it will take another 1.5 months, couple of months or so. And once the OC is complete, then we'll be able to bring it under TBI Co. Limited. सर Understood, जी, sir. So, इसमें निनाद जी मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि टीबीआई मेस प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड को पोर्ट मिनिस्टर जो है, जेएनपीटी अथॉरिटीज और पोर्ट मिनिस्टर ने 3 दिन पहले ही अवार्ड दे दिया कि आपने एसएसजेड यूनिट में जल्दी से जल्दी यूनिट जो ऑपरेशनल किया है उसके लिए टीबीआई मेस प्रोसेसर्स अपने कंपनी को स्पेशली बम्बई के अवार्ड में उनको अवार्ड देके उनको सम्मानित किया। वो भी नीना जी और अवंती मैडम वहां पे अटेंड करके उन्हें वो अवार्ड दिया है। यानी एसईजेड में भी हमने वही परफॉर्मेंस दिखाया है कि जैसे हमने यहाँ पे एक्सपेंशन और ये करते हैं, वैसे एसईजेड में अभी तक जो भी यूनिट्स है उनको पूरा ऑपरेशनल होने के लिए 6 साल से 8 साल लगते हैं। हमने टीबीएमएस प्रोसेसर्स का जो भी यूनिट जमीन लेने से उसको ऑपरेशनल हम 36 मंथ्स के बिलो हमने उसको ऑपरेशनल किया है। ये हम सब कंपनी और फैमिली के लिए हमारा अभिमानास्पद चीज है। sir, that's very great. Sir, and another just wanted to understand better regarding this only. So, sir, what are exactly the geographies जहाँ पे अभी हमने tap in कर लिया है in terms of export oriented? क्योंकि earlier you were mentioning कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा better margins will be able to see. तो एक बार sir, if you can throw some light on that. जी सर, ये as you correctly said, we have obviously entire Gulf area, GCC area, and East Asia as well, Southeast Asia. So, for example, Malaysia, Vietnam, these remain the focus. Cambodia as well. So these remain the focus, and these remain our main export zones as well. But as you correctly said, export is something that we need to work heavily on because by nature, by culture, our company was never export oriented.
So that's something that we are trying to change. And TBI maize processors Mumbai unit, because it's a 100% export oriented unit, things are now falling in place. That has pushed us as well to look at export as an important area of growth. I mean, our exports, for example, have now almost become 2.5 times this year as compared to last year. It obviously still is a very insignificant number as compared to the total revenue that company is able to bring in. But still, from about 12 CR kind of export revenue, we have reached about 30 CR kind of revenue this year. So now we have a dedicated export marketing team as well, which is working on these things, developing new markets. And to come to your point, I mean, we are precisely looking at Japan and Korea, these kind of markets, or Kellogg's and Nestle kind of companies as well, which are more premium, which are they're not that margin sensitive, but they are more hygiene sensitive. So these kind of companies and these kind of markets, we were not able to penetrate using TBI Con Limited's current facilities till now. That hygiene sensitivity, that quality that they need is something that we'll be able to definitely achieve from our Mumbai plant. Some of you who have recently joined us and probably were not part of earlier investor conferences, TBI maize processors in Mumbai is an entirely 100% export-oriented unit, and it's an entirely automized Buller designed plant. Buller is a Swiss company which is leader in manufacturing of milling machines. So that will help us, as I said, get into premium markets. Understood, sir. And roughly, मतलब, what kind of margins can we expect, मतलब सिर्फ export वाले department, मतलब vertical से? चलिए, जीसीसी देखेंगे एंड फॉर एग्जांपल ईस्ट एशिया भी देखेंगे तो मार्जिन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑनेस्टली आई मीन जीसीसी, एज यू नो वेरी वेल, मोस्ट ऑफ द purchase managers are Indians anyway, right? So they know what is happening in India. They know what are the prices that are prevalent in India. So the margins in export are not really significantly different from margins in India. But as we said, once we manage to get into Japan, Korea kind of markets, then things will definitely change. One. And second is when we'll be able to use import in JNPT, things will definitely change. As Yogi said sometime back as well, in India, genetically modified corn, we are not allowed to import. So we are not allowed to import maize in India. But the NPT SEZ is, because it's an SEZ, it's considered foreign territory. And so that is where we'll be able to bring maize as well, as long as we process it and send it again outside of India. So the things like this, this year, we are hoping we'll be able to contribute significantly. Understood, sir. So just a final question: are there any factory audits going on from our international clients regarding the as you said, they really care about the hygiene and the facility cleanliness. So are there any big brands currently undergoing something of this sort? Yeah, they do. We are now in the stage of talking to them, showcasing them to them what we have. We have completed a couple of rounds of video call, where on video calls they check the kind of facilities that they have, sending samples to them for testing. We have reached that stage right now. The audit stage will come after this. So it typically will take another 3-4 months, 6 months or so for the entire contract to become operational. Understood. And just roughly, what sort of mix are we seeing? मतलब export, what can we expect export to as a percentage of revenue to be by end of FY27, 28? What we're targeting right now is 20%. That's the target that we have kept for ourselves. Right now, our exports are about 10% of the entire revenue. So that's the target with which we are working on this year. Understood. And sir, are we planning for some sort of additional? मतलब, I know it's not dry milling, the conflicts part of it, but from what I recall, it has good margins. So for the export-oriented unit, are we planning to add on such machinery or something like that? Our export-oriented unit has a capacity of 240 tons per day in terms of not the production capacity, but in terms of space and the machine layout and half of the machines. So we can increase the capacity as we go along. Right now, 120 tons per day is what it will operate with. And then gradually as we go along, we'll add the capacity. But to be honest, this decision of that additional capacity, should it come with concrete kind of products, the dry milling products, or the conflict kind of product, is something that we are right now not 100% sure of. We kept the both options open.
So we are flexible in terms of the machinery there, that once we make a decision, we'll be able to implement it either of the ways. Understood. So, but it's currently 120 tons per day is totally dry milling for now with the new Yes. facility. Understood. Thank you Yeah. very much. Thank you. Thank Thank you, you. Yogi ji. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We'll now take next question from Shubham Agarwal. Please go ahead. Yes, Shubham. Hello. Am I audible? Ji. Okay, great. Good afternoon, Ninad ji and Yogesh ji. Congratulations on a great set of numbers you have given for H2 FY26, and really heartening to see company recording a positive operating cash flow in the full year as well, as at the same time recording such healthy growth in top line and bottom line as well. So I must say this is one of the most consistent agro processing companies that I have been tracking, and it's great to see the results. So I had a couple of questions. My first question was on the utilization numbers that you have posted. The 72% utilization number, is this on the 350 TPD capacity, or the Malkapur capacity is added when you say 72%? No, sir. It is on 350 tons per day. So right now, I mean, when we look at 350 tons, we say that 150 tons per day was our old capacity in Sangli. Another 120 tons per day capacity we have added in Sangli after IPO. And Malkapur plant is 120 tons per day, but out of that, only 80 tons per day was available to us in FY26. So that 150, 120, and 80. And so that's the 350 tons per day capacity that this 72% number is based on. The additional 40 tons per day in Malkapur has come in hand at the end of March. So this year we'll be able to utilize it. I see. So 72% is without the addition, and this year you will have the whole of the 40 TPD as well to add in your production capacity. Okay. Just another question I had was you mentioned that you had applied for your OC of the TBI maize plant. So when can we expect it to come? Like, and when are we planning to consolidate in this half yearly into TBI corn as well? That's why targeting Shubhamji this half year. We are following up on this quite rigorously, but the process takes a bit of a time with all the rules and everything else that are in place. But couple of months is what we are hoping to achieve it in. I see. What a second quarter. Second quarter, I mean, first half year, I think should be able to consolidate. Definitely. ओके सो बेसिकली H1 में हमने टारगेट लिया है कि हम ट्राई जी करेंगे जी कंसोलिडेट करने का जी great I think once that happens there will be good room for us to grow further our business so जी okay thank you so much for taking my questions. Yes. Thank you, Shubham. Thank you. Now we'll take next question from Madhurati. Please go ahead. Sir, thank you for the opportunity. Sir, I'm trying to understand the gross margin have decreased during this second half, whereas I look at any other corn processing player, although in wet milling side, everyone's margin has improved. So why is this difference versus the industry for us? So there are two reasons we feel for this. One is, I mean, if you look at our EBITDA margin, it's almost the same as last year. Minor reduction, but almost the same. But higher depreciation this year, I think, has reduced gross margin a bit. So that's one reason. Second is, we had a bit of a problem, bit of an issue to deal with in last month, 1.5 months or so of last year as well. So that is where, especially with the increased prices of plastic, for example, the bagging, because all our bags are PP bags, which are typically 50 kg, 55 kg, 60 kg bags, right? So those kind of issues have troubled us a bit. So those are smaller things that have contributed. Part of our export, as we just discussed, has gone into TBI maize processes as well. So these are the kind of things that have affected it a bit. But EBITDA margin, by and large, has remained constant. Madhur? Madhurji,
आवाज है? We'll take next question from Udit Saigar. Please go ahead. Yeah, good afternoon, sir. So you have given a guidance of 35% growth FY28. Uh, what exactly are our capacities and how do we intend to achieve this? Like, what's the roadmap for that? So the current, as we were just discussing, currently we are at 72% capacity utilization. If I break it across plants, then our old Sangli plant, 150 tons per day plant, it is running at almost 96, 97% kind of capacity utilization. And the new Sangli plant as well as the new Malkapur plant, they are yet to reach that kind of level. And that's why the average capacity utilization is about 72%. So this year will be a year of consolidation for us. So this capacity utilization will definitely increase. So that's one source of growth that will come in. And as we were just discussing, TBI maize processors will also get consolidated this year. So effectively, once it happens like 390 tons per day plus 120 tons per day, that will be our capacity. So that will be another source of growth that you mentioned. Okay, so that 120 tons, sir, how will that come in? It's like a wholly owned subsidiary or some share swap will, how is Yeah, it? yeah. It will be a share swap. So it will be completely 100% owned subsidiary of TBI Limited. Okay, got it, sir. And how do we see the margins going forward, sir? Like maize prices are pretty benign, and so I mean, is there any scope for increase in the margins? And suppose the maize prices go up, is it a direct pass through, or there could be a lag in that? That is where we would really like to be honest and tell you that we don't expect margins to increase much, and that is because our customers, for example, if we take ITC, they are quite well aware, in fact, more knowledgeable sometimes than us about maize prices, the trends, and everything else. So our relationship with these big clients, our margins with these big clients are pretty straightforward. I mean, it's really raw material price plus the processing cost that we have, which they are well aware of, plus the margins that we require. So it's really that straightforward. So the percentage margins kind of remain constant. So they will never go below 5.5%. They 5% or so. They will never go above 9% or so. So that's the range that we will always remain in. Okay. So the margins that were slightly down in H2, is that like a seasonal trend or I mean, it's doesn't matter? No, it does matter. It does matter. For example, if you look at the two halves of the year, in second half of the year, our volumes and revenue is always a lot higher as compared to first half. And at the same time, in first half, the margins are a lot better. And that happens because, as earlier Yogesh was mentioning, the two main crop periods for maize in India coincide with the second half of financial year. And so that is where corn is available in huge quantities. And that is where the margins are lesser because many people will be in the market to sell. Right? While in the first half, only those people who have considerable stock in hand will be able to serve customers. And that is where margins are a bit higher. I think our margin increase will substantially come as we had just discussed with if we make headwinds in export market with some premium customers and premium markets, that is where it will come from. Or another plan that we're working on is opening, for example, a subsidiary in abroad, for example, where we'll be able to store, and then once we have the storage available, we'll be able to sell it quickly at higher prices. So right now, typically the way export works is we get an order for 10 containers, 20 containers, we produce it and then we ship it. While as if we have 10, 20 containers standing there, then people who are buying regularly from the market will be able to serve and those generally produce higher margins. Okay, sir. Thank you. That's it from my end. Thank you. Thank you. Now we'll take next question from Darshan Chandra. Please go ahead. Yeah, congratulations on the great set of numbers. As said in the investor presentation of 35% growth, you have delivered 44 or 45% growth, volume growth. But sir, has been met in the earlier conference, no? तो आपने जब भी वो बोला था कि अभी सब कैपेक्स आपका कंप्लीट हो गया है फुल, तो ड्यू टू ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैन वी सी लिटिल बिट इंक्रीज इन द EBITDA margin from 11% to say 12%? And the corn prices are also been stuck in the range of 20 to 22. So can it is possible little bit of that?
और ट्राई तो करेंगे सर डेफिनेटली मतलब पूरा मेहनत उसके लिए कर रहे हैं बट प्रैक्टिकली थोड़ा सा होगा कि नहीं थोड़ा मतलब ऑनेस्टली डाउट है इसके बारे में मतलब विल सी हाउ थिंग्स गो बिकॉज कैसे होगा कि मतलब एज आई जस्ट एक्सप्लेन वो मार्जिन का परसेंटेज तो काइंड ऑफ फिक्स रहता है ना मतलब जैसे कस्टमर के साथ भी जो बड़े कस्टमर्स हैं हमारे छोटे कस्टमर से ज्यादा आएगा मार्जिन बट बड़े जो कस्टमर्स है उनके साथ मतलब वो मार्जिन काइंड ऑफ फिक्स हो जाता है तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा बट सम ऑफ द एक्टिविटीज दैट आई मेंशन जो हम लोग अभी करना चाहते हैं मतलब कर रहे हैं उस पर थोड़ा सोच रहे हैं काम कर रहे हैं तो वो अगर फ्रूटफुल होता है एक्चुअली हो जाता है तो रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होगा बट ऑनेस्टली हाँ मैं हाँ, नहीं सर लास्ट H1 के रिजल्ट में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपने वो ड्यू टू ऑपरेशनल नया प्लांट का ऑपरेशनल के लिए आपने लिखा था कि ड्यू टू सम ऑपरेशनल स्टार्टिंग इट वाज लिटिल बिट ऑपरेटिंग मार्जिन वाज लेस नाउ एवरीथिंग हैज बीन डन so we can see a little bit jump up in the margin. that I agree with that's something that because we are because also because what the market lies, no, little bit increase the EBITDA margin, it already reflect in the bottom line, and when the bottom line increases, the investor and the company already means it performs well. That I agree with because obviously even think I mean most of the expenses will kind of remain fixed while as more revenue will come in. So from there we'll definitely see an increase coming in. That's what we're targeting now. The operation it can increase, no sir? Ji, Yeah. ji. Thank you. If another question, I will be in a queue. Thank you, Darshan. Bye. Thank you. Now we'll take next question from Gunit Singh. Please go ahead. So can you please share the current financials of our associate, this TBI Maze processes, which we plan to merge? Financials in the sense, right now, I mean, this FY25-26, the total turnover is about 12 CR, 11.89 if I remember correctly. So that is the revenue that we have generated. Obviously, this is the first year of operations for it. I think we started in December, December last couple of days or January. That is when actually the production started. So we got about 3 months or so. Kind of March kind of was lost somewhat with the war issues and those kind of things. But that is how that unit is operational right now. Was that the question? Yeah, so I mean, if we annualize it, we can expect about 50-60 crore revenue in FY27. Is that fair or something more than that? And what's the revenue potential and margin profile there, with the margins? So eventually, the number that you quoted, we are also targeting. But whether that will happen this year, we have doubts about it. Because generating a 150 CR kind of revenue from a 120 TPD unit No, I said 50 happens CR, sorry. 50 CR. Oh yeah. I thought you mentioned 150 CR. Sorry, but yes, the once we obviously have it entirely operational, and once we manage to reach 96-97% kind of capacity utilization, then even a 130, 140, 150 number we'll be able to achieve out of that plant. And again, as we just discussed, we have option of increasing capacity in TBMS processes. So it will not happen this year, but once everything is stabilized and once we feel that we are able to utilize it well, we'll be able to increase from 120 to 240 as well. That will require about 3 months of work or so. Once we decide to do it, we'll be able to increase the capacity. Got it. So what is the margin profile there? I mean, pardon me if I missed it in your So introduction. margin as long as we serve the same customers that we are serving right now will remain the same. It's only as we discussed, it's only when we get into premium customers, premium markets, then we'll be able to see a slightly different margin. But Okay, so it's otherwise, similar to our TBI listed company margins. yeah, G. Otherwise, right now, if we serve the same customers, it will be similar. Got As I it. said, couple of points. One is that premium market point, and the second is if Indian prices go high, and then if we're able to bring import corn from outside South America or North America, then margins will be high. Got it. And the merger that will be done on the net asset value of that the TBI Maze processes, or I mean, will it be margin? I mean, margin accretive for the listed company, or Uh, the team is working on it. CA team is working on it.
So probably in a month's time, I'll be able to I'll be in a better position to share exact details with you. But it will be at really the least possible value. Promoter is really not trying to make any money out of it. The whole focus remains TBI Con Limited. Got it. So basically, what is the net block of that TBI maze processes, the value, total capex that went into that? It's about 32 CR. Because it's a completely Buller design plant, as we said, completely Imported. optimized plant. All the machinery is imported machinery. So that's a higher investment kind of unit. Got it. So, I mean, from the discussion, is it fair to assume that the merger would be closer to such a valuation? Sorry, closer to? Closer to such a valuation, I mean, the capex to put in that plant. Yeah, but not entirely. 32 CR was put in by promoters. So obviously we will take into account that as well. And accordingly we will have the ratio decided. Got it. And you directly procure 25% of maize requirements. So I want to understand what kind of margin benefits do we get from direct procurement? And like Madhur mentioned earlier, most of the listed players in the, I mean, which use maize as their raw materials, they have shown better margin profiles. So, uh, are there any efforts to increase direct procurement, sorry, direct procurement of maize? जी, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट थोड़ा बढ़ाने का तो प्लान है, मतलब हम लोग उसके बारे में ट्राई करते हैं. डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट से थोड़ा मार्जिन तो बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू बाइंग इट फ्रॉम सप्लायर्स, ब्रोकर्स, ना. So that happens. हमारा सर चल रहा है कि जो भी बड़े फार्मर्स है उनके साथ अगर हम डायरेक्टली एग्रीमेंट कर सके 3 मंथ 6 मंथ्स के लिए उनका वो क्वांटिटी के हिसाब से, तो वो भी हमारा उसके साथ फार्मर कंपनी है और तो फार्मर्स के साथ वो भी चल रहा है कि अगर वो उनको एक फिक्स प्राइस उनको भी एश्योर्ड हो जाए और उनको भी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनका कितना भी एरिया है वैसे हमारा अभी टॉकिंग में है, लेकिन अभी तक वो रिजल्ट्स क्विक नहीं है. अच्छा, तो जनरली ये मार्जिन डिफरेंस कितना होता है अगर डायरेक्ट प्रोक्योर करें? जनरली सर क्या होता है कि मतलब आपको शायद पता ही होगा कि मतलब जब फार्मर ट्रक लेके आता है फैक्ट्री पे, तो उसको तो इमीडिएटली पे करना ही है ना, मतलब इमीडिएटली ही हैज टू गेट द कैश. द ओनली थिंग इज, अगर हमारे पास कैश अवेलेबल है तो हम पे करेंगे, तो वो कैश डिस्काउंट हमें मिलेगा, सीडी जो होता है. और अगर नहीं होगा तो मतलब ब्रोकर के थ्रू उनको मिलेगा, हमें ब्रोकर को पे करना है. तो वो जो कैश डिस्काउंट है वो मतलब वहां का मार्जिन का मेनली डिफरेंस हो जाता है. दैट इज व्हेन इट कम्स टू एबिलिटी टू पे. डायरेक्ट परचेस अगर हम लोग करेंगे उनसे, तो क्या होता है कि ब्रोकर का कमीशन फिर बच जाता है, तो वो डिफरेंस आ जाता है उसमें. तो टिपिकली वी आर लुकिंग एट अबाउट इंक्रीज ऑफ अबाउट 1.2 काइंड ऑफ परसेंटेज. Got it. So, what are the targets? I mean, for FY20, matlab, do we plan to increase direct procurement above 25%? And what are the targets? I mean, if you have any internally. वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन इट. मतलब जैसे कि 2 साल पहले हमारा सिर्फ 12-13% हुआ करता था, तो वो ग्रेजुअली अभी बढ़ा के मतलब 25% तक हम लोग लेके आए. बट थोड़ा सा यहाँ पे हमें लग रहा है कि अभी द नेक्स्ट ग्रोथ इन दैट नंबर विल नॉट बी रियली दैट क्विक, दैट हाई. बिकॉज अभी थोड़ा सा मतलब वो बढ़ना थोड़ा मतलब मोर एंड मोर डिफिकल्ट होता जाएगा. बिकॉज एज ए सेड अर्लियर, मतलब उसके लिए बड़े फार्मर्स होने चाहिए जो इतना क्वांटिटी हमें सप्लाई कर सके, रेगुलरली सप्लाई कर सके. तो थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम आता है. एंड हम लोगों ने मतलब ये भी ऑप्शन थोड़े एक्सप्लोर किए थे कि मतलब फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना एंड दोस काइंड ऑफ थिंग, एज योगेश जी मेंशन. हम लोग थोड़ा वो सोच रहे कैसे कर सकते हैं, बिकॉज एज यू नो फार्मिंग कम्युनिटी इज स्लाइटली अनरिलायबल, इफ यू डोंट माइंड द वर्ड. मतलब थोड़ा वहां पे मतलब, एंड दे आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड एज वेल, सो वी हैव टू बी वेरी श्योर दैट वट एवर एग्रीमेंट वी गेट इनटू, वी गेट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट इवेंचुअली. ऐसा ना हो जाए कि मतलब प्राइस मार्केट में बढ़ गया तो मतलब वो हमें मिला ही नहीं और दूसरे कहीं पे वो मतलब बेच दिया. तो वो थोड़ा सा एक रिस्क रहता है. तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग स्लो एंड स्टेडी, मेकिंग श्योर कि मतलब रिजल्ट्स अपने पास आएगा अच्छा. Got it. And you had mentioned previously that पहले germ extraction जो होती थी हमारी 0% होती थी. And we have taken it up to 4.5%, which has increased the margins by about 75 basis points.
So, and you also mentioned that the target is to reach 8% germ extraction, which will Yeah. 100%, which will add 100 basis points to the margin. So, have we made any progress in this? जम का परसेंटेज ना जम का परसेंटेज के लिए तो काफी काम चल रहा है तो वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव अचीव्ड टिल नाउ एंड एज यू करेक्टली सेड और इसमें जगह भी है करने के लिए most of the companies in India who operate in this sector generally have 0% corn germ production. So it used to be case with us as well 4 5 years back. But gradually we're putting work. A good team is in place to look absolutely at this only. So they focus on this particular part only. So that is happening now. Gradually increase हो रहा है 4.5% से 8% तो थोड़ा सा मतलब kind of आइडियल ड्रीम सिनारियो है वो तो मतलब पता नहीं कब पहुंचेंगे कैसे पहुंचेंगे बट ये डेफिनेटली 6% 7% वी फील आर रीजनेबल टारगेट्स टू कीप तो वो थोड़ा सा मतलब एक दो साल में वगैरह तो मतलब पहुंचना चाहिए वहां पे Got it. And FY27 में मतलब what should be our germ extraction percentage और क्या तो benefit हम देख सकते हैं in terms of EBITDA margins from this, if any? So 5.5 is what we have kept as a target, 5.5%. तो लग तो रहा है कि मतलब 5 तो डेफिनेटली क्रॉस होगा 5.2 looks like definitely achievable again. 5.5 is the target for this year. Got it. And how would this impact EBITDA margins? मतलब क्या benefit? बेनिफिट तो आएगा सर बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि कॉर्न जम टिपिकली अगर हम लोग सेपरेट नहीं करेंगे तो वो तो जाएगा कैटल फीड में जाएगा एनिमल फीड में तो एनिमल फीड एज यू नो विल बी द लोएस्ट प्राइस आइटम फॉर अस whereas corn germ is the highest price item. So we're expecting another at least 25 kind of points contribution from this. Got it. So, I mean, according to you, we are on track for this 33% revenue growth and better margins in FY27. That's the target, definitely. Got it. And in terms of working capital, what exactly have we done? Have we renegotiated contracts? Because if we look at the trade payables, they have increased. So, I mean, is it so that we have renegotiated contracts with our dealers? And also, I mean, what have we exactly done which has led to this positive operating cash flow? वर्किंग कैपिटल So can you please सर ये पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो हुआ है तो इसके लिए हमने क्या स्टेप्स लिए थे क्या इनिशिएटिव्स लिए थे इन दिस फाइनेंशियल ईयर जिसकी वजह से मतलब डिड वी रीनेगोशिएट एनी कॉन्ट्रैक्ट्स या what are the main reasons for this and is this sustainable in FY27? Definitely, sir. Now we feel it's sustainable. I mean, as you correctly said, we kind of reached a volume stage where with suppliers as well as with the customers, we are able to better negotiate the rates. कस्टमर के साथ भी ये होता है हम लोग हमेशा देखते हैं वो तो होता है तो आईटीसी फॉर एग्जांपल किसी को फॉर एग्जांपल 26 रुपीज में ले रहा है तो दे विल बाय फ्रॉम अस एट 26.10 26.25 है ना दैट काइंड ऑफ रेंज एज वेल and that typically happens because they know that we'll be able to supply consistently the same quality ensuring that their plant never shuts off right it keeps on running so ये होता है सप्लायर के साथ भी मतलब बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब ये फर्क आ जाता है दैट इज व्हाट वी आर विटनेसिंग क्वाइट रेगुलरली थोड़ा इन्वेंट्री कंट्रोल भी हमारा अभी बेटर हो गया है अगेन मतलब वो जो पहले for a good volume where our business was, we were having slightly higher level of inventory because of that worry. Because it's a very whatever however proud we are of about our knowledge about maize. Finally, it's an agro commodity. Prices can fluctuate. Prices can change. So that's why we kind of were playing always the same game of having inventory in hand. But now we feel that the inventory in hand is kind of sufficient, even though volumes are increasing. So volumes have increased, but in the same percentage, inventory has not increased. So that I think is one main reason. Apart from it, as one of the earlier investor friend was asking, and we talked about it, that suppliers, मतलब जो farmers है या फिर जो हमारे suppliers है, उनको payment immediately अगर हम लोग कर सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल पेबल्स में आपको दिखेगा तो पेबल्स का नंबर थोड़ा बढ़ के दिखेगा
तो पार्ट ऑफ इट इज हमारा आरएक्साइल के साथ हम लोगों ने नया फैसिलिटी लिया है। तो इट इज अ नॉन रिकोर्स फैसिलिटी आरएक्साइल जो देता है। तो वो मतलब हम लोग अगर इमीडिएट कैश पेमेंट के लिए यूज करते हैं फार्मर्स को, तो वहां से मतलब थोड़ा अच्छा रिटर्न्स मिल जाता है फॉर एग्जाम्पल। Okay, got it. Thank you very much. I'll join back the queue. थैंक यू गुड। Thank you. Thank you. We'll take question from the chat. It's from Gursidak Makija. What is the volume and revenue expectation for FY27? सर ये जैसे हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में दिया है, तो दिस इज द आई मीन वी काइंड ऑफ हैव दैट एज अ टारगेट। सो इफ आई रिमेंबर करेक्टली अनिकेत जी, वो 35% हम लोगों ने दिया भी है ना प्रेजेंटेशन में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। कैन वी गो बैक टू इट और शुड आई जस्ट रीड आउट द नंबर्स? So you can just read off the number. ओके। तो मतलब ये सर आप प्रेजेंटेशन जब भी देखेंगे तो यू विल सी दैट वी हैव गिवन इट ऑन पेज नंबर, जस्ट अ मोमेंट। Apologies, I'm not able to. Yeah, got it now. So it is on page number 30. So typical मतलब that 35% CAGR target till FY28. So that's what we had put in last year, and same progress that those kind of numbers is what we are generating, and those kind of numbers is what we are targeting as well going forward. Sir, we'll take one last question from Darshan Chandra. Darshan, you can go ahead, please. Darshan, please unmute your line. Yeah, I'm audible, sir. Yeah. हाँ दर्शन। सर, दो तो आपने बता दिया और एक दो क्वेश्चन पूछना है। एक 390 कैपेसिटी से वी कैन रीच 550 करोड़ ऑफ टर्नओवर फ्रॉम टीपीआई अकाउंट। 390 से from 35 for this year 35 300 to it will go to 410, and from 410 to it can go to 550 turnover, right? जी सर, मतलब ये 390 टोटल कैपेसिटी है, उससे रफली आई विल से अराउंड 480 तक तो जा सकता है. That is obviously when all plants are running completely operational and those kind of things, 96-97% kind of utilization which we are targeting eventually. तो उतना तो जा सकता है डेफिनेटली. ओके और सर एक आपने बताए भी थे और अभी आपने योगेश सर ने भी बता दिया, ज्यादा क्वेश्चन तो टीबीआई मेस प्रोसेसर के बारे में सब वरी कर रहे थे कि प्रमोटर उसमें रिवर्स मर्जर करके मार्केट में उसका स्टेक बढ़ाएगा, तो आपने वो तो बता ही दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो राइट पर चलेगा, क्योंकि टीबीआई अकाउंट इज अ पेरेंट कंपनी एंड इट विल रिमेन द पेरेंट कंपनी. तो इन्वेस्टर नाउ डू नॉट हैव टू वरी ऑन दैट पार्ट. इज इट राइट? बिल्कुल सर, absolutely. Thanks, Yogesh sir. And once again, lots of investors are worried on that kind of thing, reverse merger, or lots of promoters are also doing little bit of bad things nowadays in the SME segment. So it was a lot of worry, and that was showing on the price in our prices also. Thanks for the confirmation to the investor community, and congrats once again to the company. Thank you, Darshan. Thank you. Thank you, Mr. Darshan. Sir, would you like to give any closing comment before we end this call? Definitely. I mean, I thank everyone who was present today, and not only today, but across all the conferences, across all the calls. Your guidance, I think, is very important for us. I mean, I might have gray hair myself, and Yogesh is also not very young now. But as a company in the listing space, we are very young. So it's something that is new to us as well. So, for example, as I said at the beginning, this guidance about the need for us to share with the market good work that we're doing, that has come from your inputs only. So I really thank all the investors who have been attached to us, who have been with us for this entire period of time, through the market ups and downs, which you know more about. But one thing we are very certain about is that your company is doing exceptionally well, and it is on the right track with the kind of goals that we have kept for ourselves.
Thank you. Thank you to the management team for your valuable time, and thank you to all the participants for joining on the call. This brings us to the end of today's conference call. You may all disconnect now. Thank you. Yes, Thank sir. you. Thank you. Thank you.